Hello family, this is Chef Age again, and today I will show you how to make perfect, simple recipe is French fries. And so many times people are confused like what is the process, what is the seasoning, show you how to make French fries within 5 rupees. Let's see how much we get quantity in a 5 rupees. Let's move out. First of all, we peel the potato. If you have peeled, you can do, but if you have not, you can like use knife and so many stuff. After that, we have to cut this potato finger size, like one. This is useless part, you can remove so that your finger will be come out on a perfect size. See, you can see. You can see this is the size. जितना पतला रहेगा उतना Then we have to take one ball and we will put it all under this ball. You can see I wash 3 to 4 times, and after that I leave this potato cold water to 15 to 20 minutes. Let's see, after 15 to 20 minutes we will to split another ball. And the seasoning is very simple. We will use arrowroot powder. In English, corn flour we will use to crispy. And second one we will use salt. After that you have to put anything you can put, like black pepper, white pepper. But in the restaurant, we only put corn flour and salt. That's it. Now we will add some salt. Then we will add little bit black pepper for enhance the taste. We mix it well. We will add corn flour. और याद रहे corn flour जब तक लगाना है कि वो चिपके ना. जब चिपकना बंद कर जाए और स्टिकी होना बंद कर जाए तो इसका मतलब आपका फ्रेंच फ्राई बनके रेडी है. हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे. मैं आपको दिखाता हूँ. जब आप देखो कि इसमें जैसे ये कोटिंग चिपक गई है तो इसका मतलब ये रेडी है. हम इसको ऑयल में डालें. हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका ऑयल है वो आपका मीडियम फ्लेम होना चाहिए, क्योंकि इसको हम अभी हाफ डाउन करेंगे. हाफ डाउन होने के बाद आप इसको स्टोर करके भी कर सकते हैं. आइए दिखाऊं. आप देख लीजिए, ये हम हाफ फ्राई करेंगे. तो ये देखो, जब आपकी फिंगर्स एकदम स्टक हो जाए, एकदम हार्ड हो जाए थोड़ा सा, तो इसका मतलब हाफ डाउन. तो हमको इसको 2 मिनट और फ्राई करके इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे. ये हमारा हाफ डाउन हो चुका है. हम इसको 5-10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे. तो ये हमारा एकदम गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर आया है. ये हाफ डाउन हो चुका है. जैसे 5-10 मिनट होगा हम इसको फ्राई करेंगे. और आप इसको स्टोर करके 1-2 दिन तक चला भी सकते हो. और कभी भी लाइक घर में गेस्ट आते हैं या कोई भी मेहमान आते हैं तो आप आराम से स्नैक्स के लिए ये बढ़िया सा फ्रेंच फ्राइज बनते रहेंगे. तो हम इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट के बाद. So now our French fries is ready to eat. We will put our French fries to oil to cook well. So जब तक हमारा French fries फ्राई हो रहा है तब तक हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं. आइए. So we have one nice platter and we will add some garnish to look aesthetic, and obviously it's 4-star, so we have to be garnished. This is my garnishing. 3 type of vegetable we have: cabbage, beetroot, and third one is carrot. It's look very, very authentic. Fries ready to eat. Oh, sorry, first serve them. So guys, you can see like our French fries is ready to eat, and we put a little bit chaat masala.
And let's eat to check. Mm, it's delicious. I don't know you heard the sound or not, but it's 100% delicious and crispy. So don't forget to don't forget to subscribe my videos and my channel and follow for more and enjoy it.